हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका और एक चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 10 है, डाकोर वाला ठाकुर। यानी डाकोर में जो बैठे हैं वो ठाकुर यानी कि कृष्ण भगवान की यहाँ पर बात हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर चैप्टर में क्या लिखा है। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનેક નામો જેવા કે મુરારી, કાનુડો, ગોપાલ, નટવર, ગોવિંદ, શ્યામ, કનૈયો, દ્વારકાધીશ અને રણછોડ વગેરે એમાંના રણછોડરાય ડાકોરમાં વિરાજે છે. ખેડા જિલ્લામાં ઠાસરા તાલુકામાં ગોમતી નદી કિનારે ડાકોર ગામમાં रणछोड़रायનું मंदिर आवेलू है। यानी जो श्री कृष्ण हैं वो क्या है, उनको कई नामों से जानते हैं। मुरारी, कानुड़ो, गोपाल, नटवर, गोविंद, श्याम, कन्हैया, द्वारकाधीश, रणछोड़, अलग अलग नाम से सब जानते हैं। जो रणछोड़ राय है वो डाकोर में बैठते हैं यानी विराजे छे। खेड़ा जिला से ठारसा तालुका में गोमती नदी के किनारे में डाकोर गांव का रणछोड़राय मंदिर आया हुआ है। आ मंदिर गुजरात राज्य ना वडोदरा शहरनी 45 किलोमीटर दूर आवेलू छे। यानी ये जो मंदिर है ये वडोदरा शहर से 45 किलोमीटर दूर आया हुआ है। एक दंत कथा मुजब डाकोर गाम में कृष्ण भक्त विजयानंद बारोड़ा રહેતો હતો। દર 6 મહિને પૂનમે તે ડાકોરથી દ્વારકા ચાલતો भगवान कृष्णना दर्शन माटे जतो। यानी इसके साथ में एक क्या है, भक्त विजयानंद बोडारा नाम के जो है ना बताना जो है इंसान मनुष्य, उनके ऊपर ये है कि 6 महीने में पूनम में डाकोर की द्वारका से चलकर भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। આમ નિયમિત દર 6 મહિને તે જતો હતો। વૃદ્ધ થતાં તેમને તકલીફ પડતા લાગી। પોતાના ભક્તની આ તકલીફ કૃષ્ણ ભગવાન જોઈ શક્યા નહીં। તેમને ભક્તને સપનામાં આવીને કહ્યું, હું દ્વારકાથી ડાકોર આવીશ, તું બીજી વખત આવે ત્યારે મારા માટે ગાડું લાવજે। जैसे जैसे समय गया उस समय में तो क्या है, जो विजयानंद है वो क्या है, बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए। तो जो कृष्ण भगवान है उनसे उनकी जो भक्त की जो तकलीफ देखी नहीं गई। एक दिन उन्होंने सपने में उनको बोला कि अब तुम जब मेरे दर्शन के लिए आना तो मुझे ले जाने के लिए गाड़ू यानी कि बैलगाड़ी लेकर आना। બોડા બીજા વખતે સાથે ખડખચ ગાડું લઈને દ્વારકા આવ્યો। રાત્રે ભગવાન બોડા સાથે ગામડામાં દ્વારકાથી ડાકોર જતા નીકળ્યા। પ્રભુએ ગાડું હાંકવા લીધું અને ભક્ત બોડાને આરામ કરવા કહ્યું। પ્રભુ ફક્ત એક જ રાતમાં ડાકોર આવી ગયા। यानी यहाँ पर क्या है कि कृष्ण भगवान उनकी गाड़ी में बैठ गए मतलब उनको बोड़ा को क्या बोला कि तुम पीछे बैठो और मैं तुम्हारा गाड़ी चला के जाता हूँ। इसी तरह वो क्या है, जो डाकोर द्वारका से डाकोर एक ही रात में पहुंच गए। प्रभु फक्त एक ज रात में डाकोर આવી ગયા। સવારે વિલેશ્વર મહાદેવના મંદિર નજીક લીમડાની ડાળ પકડીને ભક્તને ગાડું ચલાવવા કહ્યું। પ્રભુના સ્પર્શથી લીમડાની ડાળ મીઠી થઈ ગઈ। આમ તરફ દ્વારકામાં ગુગળી બ્રાહ્મણો ભક્તોની મૂર્તિ ખોવાતા ગુસ્સે થયા। તેમને ડાકોર જઈ બોડાને લલકાર્યો, પરંતુ અકસ્માતે બોડા મૃત્યુ પામ્યો હતા। તેને દ્વારકા મૂર્તિ લઈને જવા માંગતા હતા। ખેવાતના વિરોધ કરતા તેને ભગવાનની મૂર્તિ વજન જેટલું જ સોનું મૂકવાનું નક્કી કર્યું। तो यहाँ पर क्या है कि जो डाकोर वाले वो गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी वो मंदिर में नहीं थी। वो बोड़ा के ऊपर बहुत ही गुस्सा हुए और वो आते आते उनको अकस्मात में उनको क्या है, वो मृत्यु उनको हो गए। लेकिन उनके खेवात ने क्या है कि भगवान की मूर्ति जितना सोना मंदिर में दान देने का सोचा।
ગંગાબાઈ પાસે તો સોનાની માત્ર એક જ નથણી જ હતી. ત્યારે બોડાની પત્ની ગંગાબાઈએ મૂર્તિના વજનભાર વજનભાર સોનું મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યું. ત્યારે ચમત્કારી રીતે મૂર્તિ માત્ર એક નથણી જેટલા वजन बराबरनी हड़वी થઈ गई. यानी गंगाबाई यानी कि बोड़ा की जो बीवी थी गंगाबाई, उसके पास एक सोने की नथनी थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था. लेकिन फिर भी उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं कर पाई. लेकिन जो मूर्ति है नथनी के वजन की हो गई और एक नथनी पे ही भगवान का वजन हो गया. જેટલા વજનના બરાબરની હળવી થઈ ગઈ. ગુગડી બ્રાહ્મણે હતાશ થયા. આમ દ્વારકાધીશની મૂર્તિનો ડાકોરમાં જ રહી. આજ પણ ભક્તો બોડાનો મહિમા ગાય છે. દર પૂનમે શ્રદ્ધાળુઓ પદયાત્રા કરીને ડાકોરમાં શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે આવે છે. ડાકોરના મંદિરમાં પ્રભુના સવારથી સાંજ સુધી जुदा जुदा दर्शन થાય છે. यानी इस तरह से क्या है, जो मूर्ति डाकोर में रह गई और आज भी लोग क्या है, जो बोड़ा का क्या है उसका याद करते हैं. और पूनम के समय में बहुत लोग पग यात्रा करके डाकोर जाते हैं और भगवान के अलग अलग समय पे भगवान के दर्शन करते हैं. જેમ કે મંગળા આરતી સાથે પ્રભુના મંગળ દર્શન થાય છે. મંગળા આરતીથી રાત્રિના સંયમ સુધીના વિવિધ દર્શનો મહિમા અનેરો છે. અહીં મંદિરના પ્રસાદ રૂપે માખણ મિશ્રી અને મગજના લાડુ ભક્તો ચડાવે છે. અહીંના મોંમાં પાણી लावी दे एवा गोटा पण खूब ज प्रसिद्ध है. यहाँ पर जो मंगल आरती की बहुत ही प्रशंसनीय है और देखने का यानी बहुत ही आनंद आता है. रात्रि के समय में क्या है, इसका एक अलग ही महिमा हो जाता है. यहाँ मंदिर पर माखन और मिश्री और मगज के लड्डू भक्त चढ़ाते हैं, जिसको मुंह में रखने पर पानी आनी आ जाता है. और साथ ही में यहाँ पर गोटा भी बहुत प्रसिद्ध है. અહીં દર પૂનમે ભક્તની ભીડ જામી જાય છે. પૂનમનો મેળો ભરાય છે, પરંતુ સૌથી મોટો મેળો શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ભરાય છે. આમ દિવસે રણછોડજી સત્તા રૂપે સાક્ષાત સ્વરૂપે હાજર હોય છે, માટે તેને સૌથી કિંમતી મુકટ ચડાવવામાં આવે છે. અહીં જન્માષ્ટમીનો તહેવાર પણ ખૂબ ધૂમધામથી ઉજવાય છે. यहाँ पर पूनम के समय पर मेला भराते हैं. शरद पूर्णिमा के दिन जो रणछोड़ राय जी है वो साक्षात स्वरूप वहाँ पर हाजिर होते हैं. यूँ कहने के कारण यहाँ पर क्या है कि जो कीमती मुकुट उनको चढ़ाया जाता है. साथ में जन्माष्टमी के त्यौहार में बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं. ગૌમતી નદી કિનારે આવેલા આ મંદિરમાં પૂનમ અને જન્માષ્ટમીના દિવસે ભક્તોની ભીડ જામી હોય છે. આથી હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયા લાલ કી અને ડાકોરમાં કોણ છે રાજા રણછોડ છે જેમ ભક્તોના નારાઓથી મંદિર ગૂંજી ઉઠે છે. આ મંદિરનું વાતાવરણ પવિત્ર બની ઉઠે છે. અહીં ભગવાન કૃષ્ણ ભક્તના દિલમાં प्रकट थया होय एवो माहौल सर्जाए छे. यहाँ पर डाकोर में यानी क्या बोलते हैं, यानी भक्तों की भीड़ जब कृष्ण जन्माष्टमी के समय में जागते हैं तो बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, मंदिर माँ कौन छे राजा रणछोड़ छे. ऐसे भक्तों की आवाज़ में मंदिर पूरा गूंज जाता है. आम मंदिरનું વાતાવરણ પવિત્ર બની ઉઠે છે. અહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત દિલમાં પ્રકટ થયા હોય તેવો માહોલ સર્જાય છે. અહીં મંદિરની આજુબાજુ ડંકનાથ મહાદેવ, લક્ષ્મી મંદિર, બોડા ગંગાબાઈ મંદિર, શ્રીજી બેઠક, શંકરાચાર્ય મઠ વગેરે ધાર્મિક સ્થળો આવેલ છે. દૂરથી મંદિરના સુંદર શિખર પર ફરતો ધ્વજ આપણને આવતો હોય એવો દેખાય અનુભવ હોય છે. આમ બાલમિત્રો મંદિરમાં દર્શન કરી આપણું મન બોલી ઉઠે. हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की अने डाकोर में कौन छे राजा रणछोड़ छे. तो यहाँ पर जो भक्तों के दिल में मंदिर के वातावरण से क्या है एकदम मग्नमुग्ध हो जाते हैं. साथ ही में यहाँ पर मंदिर के आसपास डंकनाथ महादेव का मंदिर, लक्ष्मी जी मंदिर,
बाड़द गंगाबाई मंदिर, श्रीजी बैठक, शंकराचार्य मठ जैसे धार्मिक स्थल भी आए हुए हैं। यहाँ पर सुंदर शिखर यानी जो मंदिर का सुंदर शिखर है उसके ऊपर एक ध्वजा लहराती है जो कि बहुत सुंदर लगता है। हमको भी दर्शन करके बोलने का मन हो जाता है, मंदिर माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। फिर मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।